Okay, a little quick fix to the helicopter game. I have realized when I run the game, and well, there's a lot of sound. Obviously, we'll get irritated by the sound after a while, so you can mute the audio if you want. You can mute the audio from top right corner of the game here. So अब जब आप गेम चलाएंगे तो हर दफ़ा साउंड नहीं चलेगी, बाद में you can unmute and test your sound. So एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब आप हेलीकॉप्टर को फ्लाई करते हैं and you try to fire some missiles, sometimes the missiles are going just fine, and sometimes these missiles are sort of misbehaving and they're rotating and they're going up and they're going down and they're rotating. So we really don't want this to happen. So दो प्रॉब्लम्स हैं. एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो हेलीकॉप्टर है इसमें भी एक रिजिड बॉडी है जो हम सिर्फ कोलिजन के लिए यूज़ करें, ग्रेविटी के लिए यूज़ नहीं करें. आई वुड लाइक कि हम इस रिजिड बॉडी में जाके इसके तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स को फ्रीज कर दें. यानी फिजिक्स से कोलिजन की वजह से मेरा हेलीकॉप्टर कहीं नहीं रुकेगा. उसकी वजह से क्या होगा कि इवेंचुअली कोलिजन के बाद हेलीकॉप्टर विल नॉट मिसबिहेव. सिमिलरली आपका जो प्री फैब है मिसाइल का, इसको मिसाइल को हम डबल क्लिक करते हैं और ये अब प्री फैब एडिटर है. इसकी भी रिजिड बॉडी में आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो अनकॉन्स्टेंट हैं. तो अभी जाके किसी को हिट करेगा तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है. तो आई विल फ्रीज ऑल रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, यानी अब जितनी मूवमेंट है वो सिर्फ स्क्रिप्ट की वजह से होगी. इसके बाद आप देखेंगे कि आई कैन गो बैक एंड व्हेन आई रन द गेम नाउ थिंग्स विल बी मच मोर स्मूदर and playing the game will be a lot more fun than this. So I can literally fly, go up, turn around, fire missiles in the right direction, kill some enemy. Come on, yeah. So the precision is getting better. The missiles are not going here or there. I could literally kill them from a distance. That's cool. That's how you improve the game. There are a few more improvements. अगला पूरा section भी हम इसी game पे लगाएंगे, लेकिन we'll be doing something new with this game. Let's move on to the next section.